और विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने प्रोग्राम के मेन एजेंडा की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि गेस्ट स्पीचेस हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन। सो एक बेसिक स्टेप जो फैशन डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली देखा जाता है, वो एक आइडिया होता है हर एक स्टूडेंट के जहन में कि उसको पिच करता है, उस पर कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होता है। उस डिज़ाइन को जब फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद उसकी कुछ प्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट हो रही होती हैं, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट हम उसकी मार्केटिंग साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सो एक कंप्लीट एक प्रोसेस है एंड टू एंड, जिसके अंदर एक कंप्लीट साइंस इन्वॉल्व हो रही होती है। तो एआई के आने के बाद एआई किस तरह से इस एरिया को पेश कर रहा है, एआई किस तरह से इस एरिया को इन्हांस कर रहा है। जितने भी एरियाज हैं, चाहे आप एजुकेशन का सेक्टर देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें, या XYZ और कोई भी सेक्टर्स को उठा के देख लें, एआई हर एक एरिया के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो हम किस तरह से जनरेटिव एआई के थ्रू अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद बेहतर कर सकते हैं और यहाँ से नई न्यू आइडियाज लेकर अपने आइडियाज को और अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट एंड कंक्रीट कर सकते हैं। सो इस पूरे एरिया को समझने के लिए और इसके अंदर सब टॉपिक जो कि हमारे पास फर्स्ट स्पीच है, that is AI for product design and ideation. For this speech, I would like to call our first speaker, Dr. Farrukh Shahid. First, I would like to introduce. He's a research fellow at FAST University in the field of artificial intelligence, computer vision, augmented reality, and generative AI with the application of textile and fashion design. So without any further delay, I would like to call Mr. Dr. Farrukh Shahid. Please come on the stage. Assalamu alaikum everyone, and very good afternoon from my side. I am Dr. Mohammad Farrukh Shahid. I'm really pleased and really honored to be here at this platform, especially Karachi.ai, Meetup, also Ms. Neha, also this institute as well, also this esteemed guest over here who this is the drawback of the technology interference, right? Okay, so my name is Dr. Mohammad Farrukh Shahid. I have been associated with the FAST NUCES Karachi. I'm the assistant professor over there. I did my PhD from Queen Mary University of London, UK, and also from the University of Geneva. So normally लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लंदन से पढ़ने के बाद वापस पाकिस्तान क्यों आए, आप वहीं पे स्टे करते, तो मैं हर अपनी टॉप के अंदर ये बताता हूँ. There were the two reasons for that I came back. One for my parents and second for the Pakistan, to serve Pakistan in some capacity. The journey has been so mashallah good, I will share, and also the title that I have been allocated today, I will be giving you the brief on that. Obviously in 20 minutes हम उसको पूरा wrap up नहीं कर सकते, but you are more than welcome to connect with us and to discuss in all details that what we have been doing. Okay, so yes, I introduced myself. My PhD is related to the artificial intelligence, particularly for the IoT networks, Internet of Things networks. Maybe आप लोगों को इसके बारे में पता है. Okay, at first I do teach courses of artificial intelligence, computer vision, and also I supervise a lot of projects of PhD, masters, and also the undergraduate, right? And yes, my research area is related to the agriculture, textile industry, fashion industry. Also, it is related to the 5G technology, because without 5G or 4G or 6G, we cannot do anything. So this is what my research area particularly has been. Okay. I would like to highlight here the recent project that we have been working on. Alhamdulillah, I have got the team of more than 40 students जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं different projects के ऊपर. These are the projects जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं.
related to the agriculture, related to the fashion industry, related to the transportation system, and related to also many other industries as well. And बहुत आसान इसलिए काम करना क्योंकि we come from the background of artificial intelligence, also come from the computer vision, so we know that how to tackle the problem. जो एक problem है society के अंदर या जो problems हैं जो industry के अंदर है उसको किस तरह solve किया जा सकता है. These are some recent achievements that I would like to share here. Alhamdulillah, we won Pasha Awards this year and also the last year one of the project that was related to Zenith.ai. Zenith जो है वो computer vision and artificial intelligence application है for the textile and for the fashion industry. And for that we won the Pasha Award in 2022. Last year we also won the Pasha Award, and that was a project that is related to the animal passport. Animal passport actually deals with how you can verify and register the animal. It is specifically related to the cow. So this project we started in a course and we ended up having the international national recognition. So if you can just write and search animal passport project, so you can come up with a very unique idea. And we are the first in Pakistan, alhamdulillah, who released the data set of this animal passport. So we are the third in the world actually. This is what the contribution. And there are other, and I will share the details as well after this presentation. So artificial intelligence is a real game changer, right? अब हर कोई बात कर रहे होते हैं artificial intelligence से जिसने सारी चीजें change की हैं और सारी चीजें change होती भी नजर आ रही हैं. आपने देखा होगा last 2 years, 3 years बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त change हो चुकी हैं और बहुत जल्दी change हो भी रही हैं, right? The game changer is artificial intelligence. Now since the outbreak of LLMs, ChatGPTs, आपने देखा है ChatGPTs ने बहुत ज़्यादा जिंदगी आसान कर दी. But this is not over the night हुआ. इसके पीछे एक पूरा process है. इसके पीछे एक पूरा research है. Research followed by the development. Whatever the algorithm that you develop, वो फिर आपको market के अंदर नजर आता है, right? I can give you the example. When I was studying at the Queen Mary University of London, at that time my supervisor was working at the 5G antenna. जो हम मोबाइल के अंदर जो antenna उसकी technology पे we were developing at that time the algorithms. And later on we soon see that कि हमारे पास 5G technology इस वक्त enable है. वो लग पाया था पाकिस्तान में still हम लोग अभी 4G यूज कर रहे हैं, but soon we are anticipating कि हम 5G को बाद में करेंगे पाकिस्तान. So AI can be used for everything, I would say. Like since I teach the course of AI, so I can tell, okay, जो भी problem statement है उसको आप आराम से AI के through solve कर सकते हैं. And obviously, since today our topic is related to the textile, our topic is related to the fashion industry, so the AI is really facilitating us to learn the problem of the fashion, to learn the problem with the problems related to the fabric, problem related to the industry, especially for the textile. If we can see some statistics, fashion and apparel, like, so this is the status, largest economics contributing 38%, 26% and 22%. These are the statistics that we can observe from here. इसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 1.3 trillion dollars, which is like more than 300 million individuals around the world. So this is some fashion related statistics. Yes, this is, we cannot deny this. लेकिन हम इसको किस तरह टैकल करेंगे using the artificial intelligence हमारी slides पे देखते हैं. If we can just take a look at fashion sewing machine and the e-commerce market, that was already है हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें हमारे पास already we do have the brands and all that. वो किस तरह फैसिनेट हो रहा है, वो किस तरह चेंज हो रहा है using the artificial intelligence, that is really a fascinating thing. इसके अलावा अगर आप देखें artificial intelligence, especially machine learning and also deep learning models have changed this whole process of the fashion and the textile industry. Also generative AI, deep learning, and also the machine learning algorithms. And since the mentioned that if we have the data, we can do a lot. अगर आपके पास data ही नहीं है, so you cannot do anything, right? So
आप कोई सी भी अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव द डेटा, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इफ़ यू डोंट हैव द फैब्रिक, इफ़ यू डोंट हैव द क्लॉथ्स, राइट, सो वी डोंट हैव द प्रॉब्लम ओवर देयर, तो हम वहाँ पे एआई एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो डेटा ऑलवेज मैटर्स अ लॉट, एंड सिंस अब हमारे पास डेटा इतना है जिसकी वजह से बिग डेटा, अगर आपने यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बिग डेटा, डेटा साइंस अगर आप फेमिलियर हैं, सो वी आर वेरी गुड विद द डेटा साइंस, we are very good with the big data, and whenever you are good to go with the data, so you can go with the AI algorithms and computer vision algorithms. Also, the application which is related to the design and productions, so maybe color, maybe shapes and curves, जो आपके cloth से related हैं, so we can easily integrate the artificial intelligence into that to learn what has been the shape, what has been the color of the cloth, what has been the color of the particular fabric. So this is what we can integrate with the AI. These are some avenues in which AI can facilitate in the fashion industry. So first, from predictive analysis by automatic product labeling, right? So we can do the predictive analysis, and predictive analysis, okay, what are the predictions related to particular design, particular trend, जो कि users पसंद कर रहे हैं, जो कि consumer पसंद कर रहे हैं, consumer पसंद नहीं कर रहे, so we can easily perform that. Nevertheless, हमारे पास already statistical models हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी यूज होते हैं, राइट, बट वी कैन ऑल्सो leverage the enable AI technologies to learn that predictive analysis of the market. Also, there are other avenues in which we can easily integrate the artificial intelligence. I'm not going to explain one by one, but this is at the abstract level, this is the shortage of the time, but we can have a discussion, obviously. The third point, we can have a log, and also the 4th point, they are very good. Also, recommendation systems, recommendation. आपने देखा होगा कि आप कुछ सर्च करते हैं YouTube या Google पे, तो उससे उसके रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड होना शुरू हो जाती हैं, राइट, दैट हैज़ बीन अ वेरी कॉमन थिंग. सो हमारी जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं, हमारी जो systems and recommendation system are really advanced. They're really intelligent. They are really using the artificial algorithms to learn the pattern कि इस user का पैटर्न क्या है, इस यूजर का प्रेफरेंस क्या है, या इसका लाइक प्रेफरेंस क्या है, या डिसलाइक प्रेफरेंस क्या है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर वेरी वेरी गुड इन दिस रिगार्ड. So if you can see here, stages in fashion and apparel supply chains. So there are multiple stages. There are multiple stages in which we can leverage. हम बहुत आसानी से यहाँ पे computer vision and artificial intelligence को use कर सकते हैं. So let's take an example of fashion design or textile design and design specification. So we can use the technology, obviously the AI and the computer vision together, to see that what should be the design pattern. Is the design pattern is actually follow the already approved design or not? किस तरह ये deviate कर रहा है, कितना changes के अंदर है, that we can actually learn with the help of the AI technique and technology. Similarly, we can use other avenues in which we can integrate easily the artificial intelligence. Integrating AI in fashion, virtual dressing room visualization, Nike Fit for scaling application, these are over here. Amazon fashion algorithm that can design clothing by analyze a bunch of images to copy the style and then apply to new items, right? This is some of the example and which we can see here how AI is being integrated into the fashion. Similarly, this is a bit like for us a detail as in the technically. I'm not going to explain, but we can see here computer vision can be used to recognize design, identify the patterns. Okay, what was caused the design pattern approved? Yeah, selected, and if all the supply chain is following that or not, so we can easily use the technology in that. And GANs, I don't know, maybe you are familiar with the GANs, which is actually the class of the generative adversarial network, generative AI. So GANs are really doing very well job in this fashion industry. So this is also AI-driven collaborative garment development system. So if we can have a look, so we can see here there are many avenues
on which we can integrate artificial intelligence in the computer vision to change or to improve the process, right? जो एक already process है उसको हम further improve कर सकते हैं, further automate कर सकते हैं, and जो human errors है उसको हम minimize कर सकते हैं, right? But again, हम हर जगह पे AI इस पे integrate कर भी नहीं सकते, but there are some places, avenues जहाँ पे हम human को ज़्यादा preference देते हैं, right? In which we are not sure that okay, the machine will do the best, so we always trust on the human, right? And where the task is very tedious, एक बहुत repetitive task है जो कि करना है, then you can come up with the AI algorithms जो कि आपके काम को आसानी से solve कर सकते हैं. Design, these are some applications, design assistance, AI helping us to ideate around a fashion design. So this is, maybe we have to play the video. Okay. So you can have a look, these are the design assistants. Let's establish a new creative cluster of AI in design. AID Lab developed the AI-based interactive design assistant for fashion. It's the first in-market technology that can generate designs for single fashion items or a series of outlets in 10 seconds. Equipped with a variety of AI technologies, Ada can recognize a designer's inspiration through mood boards, color choices, fabric print selections, and sketches to generate unlimited design proposals to spark designers' creativity. Ada empowers fashion designers to work with AI for speedy ideation, while at the same time ensures signature design elements of particular fashion brands are realized in the new designs. With just a few simple clicks, designers can select personal options from the generated collection to further refine or include items in their collections. The system speeds up my ideation process up to 60 to 70%. What makes it stand out is that it captures the essence of my design by generating new collections based on the history of my previous designs and latest inspirations. One of the key components of the Ada system is mixing. It is an intelligent tool that facilitates accurate product search and auto-tagging by recognizing design elements and accurately distinguishing more than 2,300 colors in fashion images. Ada promotes not only speed and efficiency, but also inspiration and creativity. It is an effective tool for the industry to unleash the potential of AI for design. This is one of the system, AI assisted, and we can have a look on others. Since Atomic is also one of the tool in which you can experience the ideation and also the realization of the stuff related to the fashion and virtual try-on. So we can have a look on this. This is the way products have been created for a very long time. What we're trying to do here is improve that process. We just want to make that a lot faster than it is. We call this a smart traditional approach. You upload a pattern. It could be a single pattern for a single style, or you can upload multiple patterns for the same style. If you plan to have a modular design library, uploaded patterns go through a piece and entity detection process. We can apply grading models automatically to pieces. And in a similar way, because we've detected and classified each piece, we're able to apply the 3D simulation models as well. In a similar way to how we can automatically grade, we can also automatically create a 3D simulation. The JSON file has all the 3D simulation metadata included within it. The JSON schema can also support different avatar dimensions, as well as textures and physics for materials. So you can create an almost photorealistic render. This is one of the example. Also, if we can go with the pattern generation using the AI, so we can have this. Have you ever wondered how you can create unique and stunning patterns for your projects in just a few clicks? Well, no worry.
Introducing Pattern AI. To begin, head over to the dashboard and simply enter your prompt. From there, you have the option to make changes to the settings as needed, or simply keep the default setting. Hit the generate pattern buttons and within seconds, you will have an incredible pattern designed at your fingertips. But Pattern AI don't stop there. You can add your generated pattern to your favorites, download it, and even generate similar patterns. The Pattern AI allows you to create unique patterns for your product quickly and easily. With this simple AI tool, you can search and create thousands of royalty-free patterns for every surface, and if you prefer, you can search through vast library of royalty-free stock images and download them for free. Don't waste any more time trying to create seamless patterns on your own. Let AI do the work for you. Start generating your own unique patterns today with Pattern AI. Discover latest AI tools with video demos. Visit aidemos.com. Okay, so this is again one of the you can refer. So these are the tools that you can also discover and take the leverage for this. And yes, so the question is where we are in Pakistan, what we are doing. So I would like to call upon my team, Shahid, Mohammed Ahmed. They can just explain in just 1 minute that what we have been doing related to this, and they can also show something that we have developed so far. So please, guys. Welcome everyone. Sure. तो ये हमारी टीम है, हम लोग सारे सीएस बैकग्राउंड के, हम सब ने कंप्यूटर साइंस, हम सबका भी फाइनल 8 सेमेस्टर चल रहा है। हम लोग तो बेसिकली ये हमारी एक और टीम फास्ट थी। हम जो बेसिकली कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में जो डेनिम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डेनिम जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, उसके अभी कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैनुअल लेवल पे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनकी मेजरमेंट्स होती हैं, उनके कलर मैचिंग वगैरह, उनके सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग टाइम मीटिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब क्लाइंट आता है मीटिंग करने के लिए कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए, और वो अगर एक चेंज की रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस पर कुछ चेंजेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न चाहिए या कुछ भी, तो उसको कैटर करने के लिए कभी 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, कभी 2-3 घंटे, और कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं और कभी कम भी। तो उसकी वजह से नेक्स्ट मीटिंग में चल जाते हैं। सेकंड इज डेट कंस्ट्रक्शन, जो कि वही कंस्ट्रक्शन को उसकी कैटर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि चेंज बड़ी से भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। और अभी तक जो कि मैनुअल क्वालिटी चेक होता है उसके कुछ इशूज़ हैं। मैनुअल क्वालिटी चेक में लेबर चेक कर रही होती है, अक्सर ह्यूमन एरर भी हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली वो पीस कस्टमर रिजेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है, और इवेंचुअली वो सारी वेस्टेज में जाती है, फिर सारी मार्केट में चली जाती है। So what we are doing is we are bringing 4 options using AI: quality control advancements, color matching, gene story, and virtual try-on. जीन स्टोरी बेसिकली हम ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर हमारे पास आता है, बोलते हैं कि डिज़ाइन जो कि चेंज कर नहीं दिया, वो पैटर्न जाहिर सी बात है 6 से 8 घंटे जितनी भी टाइम लगता है हम लोग फॉरन नहीं कर सकते। व्हाट वी आर डूइंग इज, जैसे आप सबने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा, उसमें हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे हम ये उस तरीके से करें कि हम प्रॉम्प्ट देंगे, पर्टिकुलर सिलेक्टेड प्रॉम्प्ट भी होंगे जैसे बटन्स होंगे, और उसमें सिलेक्ट करके वो उसी क्लाइंट को जनरेट करके दिखा सकते हैं। ये प्रोसेस मुश्किल से 1-2 मिनट का भी नहीं होगा, और हमारी उसी मीटिंग में हम उनको बहुत सारी चीज़ जनरेट करके दिखा सकते हैं और उनके पास बहुत सारी वैरायटी भी दे सकते हैं। सेकंड इज वर्चुअल ट्रायल। वर्चुअल ट्रायल हम बेसिकली ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मीटिंग में क्लाइंट आता है, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, सब रजिस्ट करते हैं कि हमें चेंज करना है, हम लोग खुद ट्रायल करेंगे, सबको थोड़ा अजीब लगता है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव रोल्स में लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमें यार हम लोग चेंज करेंगे, हम अजीब सा होते हैं, अनकंफर्टेबल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं सामने। तो उनके लिए हम लोग वर्चुअल ट्रायल लेके आए। उनको आपको कोई चेंज नहीं करना, जस्ट उनकी बॉडी स्कैन होगी और वो आपको वर्चुअल ट्रायल करके आराम से चेक कर सकते हैं कि हाउ इज द फिटिंग एंड एवरीथिंग।
अभी जो क्वालिटी यहाँ पे मेजरमेंट का क्वालिटी कंट्रोल में हम दो काम कर रहे हैं बेसिकली अभी, एक कलर मैचिंग कर रहे हैं और हम लोग मेजरमेंट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैनुअल लेबर काम करती हुई टेबल होती है, वहाँ पर उन्होंने डेनिम अपनी जीन्स रखी और वो सारी इंच टेप से वो सारी चीज़ें मेजर करी हुई, जिसमें अक्सर एरर्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन एरर की वजह से बहुत सारे एरर आ जाते हैं, इवेंचुअली लीडिंग टू टेल्स। हम ये कर रहे हैं, हम हमारे जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली कैमरा प्लेस कर रहे हैं ऊपर, एग्जिस्टिंग टेबल है, सब कुछ एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया। कैमरा क्या अगर एक जीन्स की पिक्चर लेगा उधर से और वो सेंड करेगा एक कंप्यूटर को, कंप्यूटर में हमारे एआई के एल्गोरिथम चल रहे होंगे, एआई के एल्गोरिथम में सारी चीजें, फॉर एग्जांपल उसकी साइज, हमारे बहुत सारे एआई के मॉडल्स, फॉर एग्जांपल यूलो V8 है और ज्ञान वगैरह इस तरह के एआई के मॉडल्स जो कि पिक्चर को चेक करेंगे, उससे सारी उसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उसके मेजरमेंट्स निकाल लेंगे, उसके कलर्स निकाल लेंगे हम लोग सारी और चीज बना लेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसमें कलर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, स्लाइड कलर का भी चेंज होता है तो वो फॉरेन रिजेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हल्का सा टिंट भी आता है ब्लू या फिर येलो, जो टिंट होता है सिर्फ जीन्स पे थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है उसकी वजह से भी पीस रिजेक्ट हो जाता है। हम उसको परफेक्ट करें किस तरीके से, हम एआई के थ्रू ही कर रहे हैं। 3-4 एल्गोरिथम्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बॉक्सेस के लेके हम उसको बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम उसको एआई के थ्रू हम ट्रेन करवा रहे हैं। यह हमारे एक स्लाइड से डेमो था जो हमने अपना एक MVP बनाया था, जिसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड पीस है जिससे हम मैच करें और बाकी वो इमेज चेक करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये जनरल रिजल्ट्स हैं जो कि बिल्कुल टेक्निकल कोई बंदा उसके लिए हर एक मेजर है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कितना है, पॉइंट टू पॉइंट राइट विद, डिस्टेंस इन सीम कितनी है, आउट सीम कितनी है, एरिया कितना है, लेंथ वगैरह हर एक चीज की, पॉकेट्स की, बेड विड्थ की, और एक वेटेड सिमिलैरिटी है, सारी चीजों को वैल्यूएट करके बेसिकली सारे मैट्रिक्स को वैल्यूएट करते हैं और एक हम एक आंसर दे देते हैं कि इज इट मैचेबल और नॉट। और जो एम्प्लॉय उधर होगा वो सर्टेन उसको देखेगा, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन है मैच कर गया, फॉर एग्जांपल हमारी एक्यूरेसी अभी 0.9, बोलेगा एक्सेप्ट है, ठीक है मैं इसको चेक कर देता हूँ। जैसे वो 0.9 या 0.8 सर्टेन क्राइटेरिया से नीचे जाएगा हम उसको हटा देंगे। थैंक यू। I'll just take one. So we are working with Dr. Farrukh Shahid, and let's just quickly have a look on our objectives. So first is to create a fashion landmark detection. What it is basically, we'll look further into it. So this part is done actually. Then second is to create a virtual try-on, and third is to create a website where user can experience all our features. So virtual try-on, हमने देखा है कि हमारी पूरी जो वर्ल्ड है पेंडेमिक के बाद शिफ्ट हो चुकी है और हमने कपड़े ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि वी कैन नॉट एक्चुअली फील द क्लोथिंग ऑन आवरसेल्व्स, हम देख नहीं सकते कि हम कैसे लगते हैं। तो virtual try-on is going to help to visualize and to really see what clothing look like on you. Then we have fashion landmark detection. अच्छा, एक हमारे पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमने कपड़े देख तो लिए लेकिन इज इट गोइंग टू फिट आवर बॉडी परफेक्टली। उसके लिए हमने क्रिएट किया है फैशन लैंडमार्क डिटेक्शन, जो कि आपके बॉडी लैंडमार्क से डिटेक्ट कर लेता है, आपके शोल्डर्स टू योर वेस्ट टू द हेम ऑफ योर ट्राउजर, और आपकी बॉडी पे परफेक्टली साइज पे फिट कर देता है क्लोथिंग्स को। This is the view. These are all the annotations we put on the waist, on the shoulders, and all over our clothings. Now I'll give the mic to Ganza. Okay, so I would like to talk about our landmark detection model. ये part है जहाँ हम actually AI के साथ खेल रहे हैं. So yeah. So basically, let me just tell you कि हमारा virtual landmark detection model है क्या. उसमें हमने AI and specifically deep learning models को इस्तेमाल किया है. As Tahim explained, what our landmarks are, ये सारे वो points हैं जिससे fitting आती है in our actual clothes. Yeah. So what our model is doing is कि वो आप जब अपनी screen खोलेंगे, user सामने खड़ा होगा, वो automatically points detect करेगा. This is the AI part. AI क्या है? हमने 4 deep learning models use किए हैं pre-trained, which is VGG 16, ResNet 50, Inception V3,
एंड एन LXNet इंस्पायर्ड मॉडल। इनमें हमने खुद अपनी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की है, टॉप लेयर्स फ्रीज करके अपनी लेयर्स ऐड की है, जिससे एंड रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह बन रहा है कि जब हमने जो ये एनोटेशंस की हैं और इनको हम अपने मॉडल में रन कर रहे हैं, तो जो हमारा सिस्टम लैंडमार्क्स प्रिडिक्ट कर रहा है, दे आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द लैंडमार्क्स दैट वर एक्चुअली देयर। एंड इससे इस्तेमाल करके हम अपनी वर्चुअल ट्राई ऑन में ऐड करेंगे, ताकि जब एक यूज़र अपने कपड़े ट्राई करे तो वो उसी फिटिंग के साथ ट्राई करे। आई हैंड इट ओवर टू कंजा क्विकली, ताकि हमारा वर्चुअल ट्राई ऑन सिस्टम भी आप समझ लें। अब हम अपने वर्चुअल ट्राई ऑन की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमने वर्चुअल ट्राई ऑन जो है वो एक AR लेंस के थ्रू बनाया है। AR लेंस जो है वो हमने लेंस स्टूडियो में बनाया है, और लेंस स्टूडियो जो है वो स्नैप AR का टूल है। स्नैप AR जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो स्नैप इंक ने डेवलप किया है। इसमें आप AR एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं और मल्टीपल लेंसेज बना सकते हैं। फिर लेंस स्टूडियो में जो आप लेंसेज डेवलप करते हैं वो लेंस जो है वो शेयरेबल होते हैं। आप उनको अपनी वेबसाइट्स पे होस्ट कर सकते हैं, उनको अपनी एप्लीकेशंस वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो अब हम अपनी मेथोडोलॉजी के स्टेप्स देख लेते हैं। बेसिकली इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है हमने कुछ एसेट्स वगैरह इंपोर्ट किए, जिसमें हमारा एक बॉडी रेफरेंस है और हमारे वर्चुअल ट्राई ऑन पैक है। ये वो 2 एसेट्स हैं जो हमारी बॉडी ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे जो 3D क्लोथ्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो है हमने 3D ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि यूजर्स की मूवमेंट्स वगैरह को ट्रैक करेगा। एंड देन वी एडेड द मैश ऑब्जेक्ट फॉर द क्लोथ्स एंड ऑक्लूजन ऑब्जेक्ट फॉर ऑक्लूजन के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्लूजन होता क्या है। जब हम क्लोथ्स ट्राई करते हैं, व्हाट वी वांट कि वो क्लोथ्स यूजर के फ्रंट पर आए और एक रियलिस्टिक सी आपको फील दे। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो है हमने अपने ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे आउटफिट्स हैं उनमें हमने रियलिज्म डालने के लिए रफनेस, कलर स्कीम वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करी, ताकि एक वो रियलिस्टिक सी यूज़र को एक्सपीरियंस दें। फिर हमने अपने लेंस की जो है वो टेस्टिंग करी डिफरेंट डिवाइसेस पर, लैपटॉप्स पे की और मोबाइल फ़ोन्स में करी, और फिर हमने उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में भी टेस्ट किया कि वो हर लाइटिंग में एक हमें ऑप्टिमल लाइटिंग पता चल जाए। फिर हमने उसकी रिफाइनमेंट करी। उसके बाद जो है हमारा लेंस, वी हैव डेवलप्ड दिस लेंस। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हम बेसिकली जो ये लेंस है इसमें जो क्लोथिंग है वो वेस्टर्न है और हम चाहते हैं कि हम इसको ईस्टर्न की तरफ लेके जाएं, तो हम अब अपने ईस्टर्न क्लोथ्स का 3D मॉडल बनाएंगे और फिर हम अपनी वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। This was all about the virtual try-on. Thank you. Thank you for listening to us. These are the 2 projects that we have been actively working on.